Hello everyone. So today we are here to discuss the Codeforces round 981, which was dated for Div 3 and took place yesterday. So I was able to solve up till G. So we will be discussing all the problems and their solutions in this video. So let's start with the very first problem. So the problem says that Sakurako and Kosuke decided to play games with a dot on a coordinate line. The dot is currently located in position x is equal to 0 and they will be taking turns. So पहले Sakurako चलेगा and then the Kosuke. So on the ith move, the current player will move the dot in the same direction, in some direction by 2i minus 1 units, and Sakurako will always be moving the dot in the negative direction, and whereas Kosuke will be moving in the positive direction. So in other words वो इस तरीके से मूव करेंगे. This is some description कि यार पहले इनिशियल मूव्स कैसे होने वाले हैं, and they will keep on playing while the absolute value of the coordinates of the dot does not exceed n. So basically वो तब तक मूव करते रहेंगे जब तक n से नीचे या उसके इक्वल रहता है the coordinate. So your task is to determine who will the one who makes the last turn. तो ये हमें इसके अंदर बताना है. So let's see कि कुछ एग्जांपल के साथ कि how this is gonna work. So if we take this example 6. Okay, so let's discuss the problem statement first, then we'll take an example. So basically there are gonna be two players. Naming convention में थोड़ा सा small देने के लिए I'm just using S and K instead of their full name. So होगा क्या, if this is our coordinate line or number line, initially हम इस position पर है, Sakurake will take us through this position, then it will take us some steps in the positive direction, then we will again go to some negative direction. So on this game will go on, and जो last move करेगा such that our position x is less than is equal to n. इसके बाद जो भी last move करेगा वो हमें बताना है. So if we take about for test case 6 और for n is equal to 6, किस तरीके से गेम चलेगी, लेट्स सी कि क्या होने वाला है इसके अंदर. So if this is something which is our number line, so होगा क्या, in first move कौन चलेगा, it will be played by s, and कितने steps जाएंगे, negative 2 into 1 minus 1, one direction. So basically we are standing at negative 1, no issues, चलेगा. In second move किसी और कलर से रिप्रेजेंट करते हैं हम. So in second move k will move and कितना, 2 into 2 minus 1 which is 3. So basically we will be moving 3 directions in this side, so we will reach at position 2. All right, होगा क्या उसके बाद, थर्ड मूव जो आएगा it will be played by s, and total displacement will be 3 into 2 minus 1 which is 5. So basically हम इस डायरेक्शन में जाएंगे 5 steps, टोटल 5 steps, तो दो तो इधर एंड तो -3. ठीक है, अगेन we are gonna move for the fourth move with k, where 2 into 4 minus 1 which is 7th move, so it will go up till 4 and so on. Similarly जब अगला मूव आएगा मैं बिना काउंटिंग के, अब आई गेस पैटर्न देख के हम बता सकते हैं that it will go up till -5. Similarly this will go up to +6. So last move, अब हम 6 तक आ गए हैं. Now we cannot move further. My x is less than, अगर आप उसके बाद अगला वाला मूव खेलते हैं तो it will go out of bounds, it will be greater than n. So last move किसका हुआ, of k. So क्या हमारा 6 के लिए यही आंसर है, let's see first and second test case.
सो आफ्टर 6 वापस से हम इस डायरेक्शन में आएंगे विद एस एंड विल रीच टू -7। अब यहाँ क्या हुआ, इस पॉइंट पर द एब्सोल्यूट डिस्टेंस ऑफ -7 इट बिकम्स ग्रेटर देन n। यहाँ पर गेम स्टॉप हो जाएगी। क्लियरली मेंशन है, कैन वी कैन कंटिन्यू द गेम अंटिल एंड अनलेस दिस एब्सोल्यूट ऑफ x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू n। तब तक हम कंटिन्यू करते रहेंगे, अदरवाइज वी विल स्टॉप द गेम एंड जो लास्ट मूव होगा वो आंसर है। सो फॉर दिस टेस्ट केस n इज इक्वल टू 6 s1, तो आंसर होना चाहिए साकुराको विच इज देयर। तो इसके बाद हमें कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि यार बेसिकली हम कितने मूव करने वाले हैं इन द नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन, वो हमें फर्क नहीं पड़ता, बट वी आर मूविंग इन दिस वे कि यार 1 2 3, क्योंकि हमें एट द लास्ट सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज कंसीडर करनी है कि वो हमारे स्कोप में हो। तो हम इन सबकी एब्सोल्यूट वैल्यूज कंसीडर कर लेते हैं सिर्फ। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। सो वी नो कि यार सब इस तरीके से पैटर्न में मूव करेगी गेम, दैट नेगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन किस में जा रहा है, अगर हम उसको ड्रॉप भी करें तो वी नो कि यार आइदर वी आर गोना बी ऑन 1 और -1, तो वो हमें फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि हम एट द लास्ट वी आर गोना कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यू विद n। तो हम सारी एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंसीडर कर सकते हैं, बट वी नो कि जितना भी हमारा गेम का स्कोप है उसके बाद जो नेक्स्ट मूव होगा वो कौन चलेगा, दैट विल बी द डिसाइडिंग मूव, क्योंकि वो लास्ट मूव होने वाला है। सो यहीं से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि यार इफ n इज इवन, तो सारे इवन वाले स्टेप्स कौन चल रहा है, k चल रहा है सारे इवन वाले स्टेप्स, वी कैन सी दैट। तो हमेशा जब भी इवन आएगा, whenever rn is even, in that case लास्ट स्टेप हमेशा किसका होगा, s का, क्योंकि इवन तक तो हम स्कोप के अंदर रहेंगे ही रहेंगे एंड द ऑड स्टेप विल बी टेकन बाय s। सो हमेशा लास्ट स्टेप उसका होगा। एंड सिमिलरली इफ n इज ऑड, वी नो द लास्ट स्टेप विल बी टेकन बाय k। और ये आई गेस अगर हम इतनी डिटेलिंग में ना भी जाते तो शायद यहाँ टेस्ट केसेस में भी यही है कि 1 इज k, 3 इज k एंड इवन नंबर्स आर s। सो इतना सही काम था। if we see the code for this problem, so this is the code। so basically we are taken the input and if it's even, we know Sakurako is gonna win, otherwise it will be Kosuke। so this was the solution for this problem. Let's move on to the next problem, which is Sakurako and Water। so during her journey with Kasuko, काफी weird name है यार, Kosuke, Sakurako and Kosuke found a valley that will be represented as a matrix of n cross n, and where the intersection of the ith and jth column is a mountain with a height of aij। If aij is, तो वो lake है, and Kasuko is afraid of water, so Sakurako needs to help him। So with her magic, she can select a square area of mountains and increase the height of each mountain on the main diagonal of that area by exactly 1। so more formally, so basically the explanation has similar, uh, determine the minimum number of, so if I would have to explain the problem statement, so वो कुछ ऐसा कह रहा है यार, प्रॉब्लम बी में कि यार एक मैट्रिक्स गिवन है आपको, it is filled with some things, so if the value of aij is less than 0, so that is basically represented by a lake as of now। so if I say कि यार ये लेक है, ये लेक है, ये लेक है, समथिंग लाइक दिस, एंड इसके अलावा अगर कुछ है तो दे आर माउंटेन्स, भाई ये माउंटेन है, 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 ये माउंटेन एंड ये माउंटेन है, सो ऑन। सो कर क्या सकता है, सो वी नीड टू, कासुके को भाई वाटर या लेक नहीं पसंद, सो शी और ही वांट्स कि यार सारे माउंटेन्स में कन्वर्ट हो जाए। एंड सेकंड प्लेयर हैज कि यार उसके पास एबिलिटीज हैं कि वो कोई भी स्क्वायर कंसीडर करे, लेट्स से ये वाला स्क्वायर,
सो अगर हम स्क्वायर को कंसिडर करते हैं, द स्क्वायर, तो वो क्या कर सकता है, इसके मेन डायगोनल की हाइट इंक्रीज कर सकता है बाय +1। लेट्स से दिस इज -1 इनिशियली, तो अगर वो इस सबकी हाइट इंक्रीज करेगा +1, तो माउंटेन्स को तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है, बट जो लेक है वो बेसिकली खत्म होकर के वहां भी एक माउंटेन बन जाएगा। सो दैट्स व्हाट वी नीड कि यार ये भी एक माउंटेन बन जाए। सो हाउ मच मूव डिड वी टुक टू कन्वर्ट इट टू माउंटेन +1 इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ऐसे मिनिमम मूव्स बताने हैं हमें फॉर द टोटल ग्रिड कि हम सारे एरियाज को माउंटेन्स में कन्वर्ट कर पाए। सो इफ वी सी सम टेस्ट केसेस लाइक दिस, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, ये देख लेते हैं 1 2 3 -2 1 -1। सो लेट्स मेक इट here कि यार 1 2 3 -1 1 -1 -2 1 -1, this is -2 1 -1 and 0 0 -1 0 0 -1। सो हम कितने भी टाइम्स उसको किसी भी ग्रिड को चूज कर, सॉरी किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल को चूज कर सकते हैं टू इंक्रीज द हाइट, एंड सिर्फ हम डायगोनल्स पे वर्क कर सकते हैं, वी कैन नॉट वर्क ऑन एनी अदर सेल। और एक बार में पूरी डायगोनल की हाइट +1 हो सकती है एंड एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, बट हमें बताना है कि हाउ मच मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस आर नीडेड टू डू दिस थिंग। अब मिनिमम ऑपरेशंस कैसे फिगर आउट करें, लेट्स सी कि यार इस टेस्ट केस के लिए कैसे वर्क करने वाला है। 1 2 3 -2 1 -1 0 0 -1, ठीक है। सो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक, आई होप दिस सेल, तो मुझे एक बार ये चूज करना पड़ेगा, my height will be look, my grid your this will start looking like this here, 1 2 3 -1 2 1 1, and ये -1 are already there, इसको हमने नहीं छेड़ा। सिमिलरली अगेन हम इसको चूज करेंगे सेम थिंग, एंड अगेन विल इंक्रीमेंटेड बाय 1, तो ये -1 से कितना हो जाएगा 0, इट विल बी 3, इट विल बी 2, इट विल बी 2, ऐसा कुछ बन जाएगा। Similarly again we can choose this and this cell individually, so total number of moves needed are 4। so let's see कि क्या आंसर 4 है for first second third, first second third, this is 4। so that's how we are going to do it। so ये अब हम अगर मैथमेटिकली ना भी घुसते इसके अंदर, so we know कि यार कैसे होने वाला है, क्योंकि बेसिकली there is a grid एंड हम किसको अपडेट कर सकते हैं, we can only update diagonal, if there is a diagonal we can only update it, एंड मैं डायगोनल को कब अपडेट करूंगा, इफ देयर इज एनी नेगेटिव वैल्यू इन द डायगोनल। अगर नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं तो डू आई नीड टू रियली अपडेट द डायगोनल, नहीं मुझे फर्क ही नहीं पड़ता उससे। बट अगर नेगेटिव वैल्यू है, सो आई हैव टू इंक्रीमेंट इट बाय 1 बाय 1 बाय 1 until and unless I make it to equal to 0, तब तक मैं उसको अपडेट करता रहूंगा। बट कितना अपडेट करना पड़ेगा, लेट्स सपोज इस डायगोनल के अंदर एक वैल्यू है -12, एक वैल्यू है -10 एंड एक वैल्यू है -1, तो क्या मैं सिर्फ एक बार अपडेट करके काम कर सकता हूँ, द आंसर इज नो। क्या सिर्फ 10 बार अपडेट करके मैं अपना आंसर प्रूव कर सकता हूँ, द आंसर इज नो। तो मुझे कितना करना पड़ेगा, सो बेसिकली एक डायगोनल के अंदर जितनी भी मैक्स नेगेटिव वैल्यू है विच इज 12, अगर मैं इतनी बार इंक्रीमेंट करूं तो बेसिकली ये तो 0 हो जाएगा, एंड अगर मेरा मैक्स एलिमेंट ही 0 के इक्वल हो रहा है तो उससे छोटी नेगेटिव वैल्यूज ऑब्वियस सी बात है प्लस वाली रेंज में कहीं ना कहीं लाया करेंगी। सो मुझे सिर्फ जितनी भी मैक्स नेगेटिव वैल्यू है उतने टाइम्स अपडेट करना है फॉर एनी पर्टिकुलर रो, एंड ये मैंने किसके लिए करा, फॉर वन रो, और सॉरी फॉर वन कॉलम आई वुड से। इफ आई कैन डू दिस फॉर ऑल द कॉलम्स, मेरा काम हो गया। सो हमें करना क्या है, वी जस्ट नीड टू ट्रेवर्स ऑन द गिवन मैट्रिक्स, एंड उस पे मेरे को जो सारे कॉलम्स कंसिडर करने हैं, एंड हर कॉलम का मुझे क्या निकालना है, मैक्स नेगेटिव वैल्यू, एंड इसका मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर लेना है माय आंसर, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। सो इफ वी सी द कोड फॉर दिस, वो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था।
Okay, I have to copy it again. So basically here I had taken the input of n and answer को 0 से initialize कर लिया. ये बनाई array 2D vector, and here I had taken the input of the 2D vector, and यहाँ basically this is a way of traversing on columns, and for every column I am taking mx and making the considering only the negative values, and उसको मैं maximize करा रहा हूँ with my mx to choose the maximum negative value, and जो भी maximum negative value निकल के आ रही है for any column I am adding it to my answer and just printing my answer. So this was the code problem B. Let's move on to the next problem. Let's see the next problem, which is problem number C. So even in university, students need to relax. That is why Sakurako's teacher decided to go on a field trip. It is known that all of the students will be walking in one line, and the student with ith index has some topic of interest, which is described as AI. And as a teacher, you want to minimize the disturbance of the line of students. So disturbance create hogi when the same topic of interest. In other words, disturbance that continuous हो जाएंगे, ठीक है. So in order to do this, you can choose any index and swap it with n minus I plus 1, and you can perform any number of swaps. Your task is to determine the minimum amount of disturbance that you can achieve. So basically the question is saying कि यार this is problem C. So the question says कि यार एक क्यू में बच्चे चल रहे हैं for any picnic or any line, and disturbance is something कि यार यहाँ पर भी same value है and next position पे भी same value है. So if I and I plus 1 are having same value, so basically this is will be considered as disturbance. But to break this thing, मैं क्या कर सकता हूँ, this I को I can swap it with I plus n minus 1, n minus I plus 1, I guess. Let me check again. It's n minus I plus 1. Yes, sorry. So it's n minus I plus 1. मैं इस I को इस ith index से swap कर सकता हूँ, and this will look like this कि भाई after swapping it's 0 and 1, and यहाँ पर आ गया 1. So this will be the orientation, and after this there is no disturbance, so this is the best thing for me. So मुझे इस order को, इस array को, इस queue को इस order में arrange करना है so that the minimum disturbance will be there. Yeah, now that will be the best case. So if we see one example which is double triple 1 2 3. So in the first example it is triple 1 2 3. So basically हम क्या कर सकते हैं यार, यहाँ पे आया मैं, आई नो दिस इज गोना क्रिएट अ डिस्टर्बेंस विद दिस. मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, आई कैन टेक दिस 2 एंड मैं इसको यहाँ ले आता हूँ. क्या देखते हैं क्या होता है फिर. नाउ वी हैव इट लाइक 2 1. ओ सॉरी, पोजीशन भी तो देखनी पड़ेगी ना किस चला रहे हैं. सो फॉर दिस आई कैन टेक दिस 3 हियर. सो it will be 3 1 1 2 and 1. So after this my total, earlier my disturbance is 2 क्योंकि ऐसे दो इंडेक्सेस थे. फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस. बस आफ्टर स्वैपिंग कितनी डिस्टर्बेंस रहेगी, सिर्फ एक. सो इससे और ज़्यादा मिनिमाइज हम डिस्टर्बेंस को करा ही नहीं सकते एनी हाउ. सो द आंसर फॉर दिस टेस्ट केस इज 1. यस. सो इस तरीके से हमें बताना है. So the basic idea for this is कि यार maybe there were some greedy DB solutions, but मेरे हिसाब से greedy better था and it worked, तो वही करा. So होगा क्या, let's suppose for any index if this is equal to the next element, if a of I is equal to a of I plus 1, let's not
कन्फ्यूजन होगी। So, यहाँ पर कुछ वैल्यू ले लेते हैं हम, समथिंग डिफरेंट देन दिस, कि यार x है। सो इफ a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ i प्लस वन, कि यहाँ पे दोनों पे सेम वैल्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, द ओनली टू ऑप्शंस फॉर मी आर कि यार या तो मैं इसको स्वैप ना करूँ या मैं इसको स्वैप कर दूँ। एंड इफ आई स्वैप इट आउट, तो हो सकता है कि यार आगे भी सेम वैल्यूज पड़ी हूँ, क्योंकि ये बेसिकली जो स्वैपिंग चलेगी ये इस ऑर्डर में है कि फॉर द फर्स्ट इंडेक्स मैं लास्ट से स्वैप कर सकता हूँ, फॉर सेकंड इंडेक्स मैं सेकंड लास्ट से स्वैप कर सकता हूँ, एंड सो ऑन। सो होगा क्या, इफ फॉर दिस पोजीशन मैं जिससे भी इसको स्वैप करने वाला हूँ, ये या तो यहीं पे मेरी ओरिएंटेशन खराब कर रहा है, या हो सकता है कि मैं अगर स्वैप कर दूं तो ये वहां जाकर के ओरिएंटेशन खराब कर दे। बट मेरे को तो मिनिमाइज करानी है ना अपनी डिस्टर्बेंसेस या बैड ओरिएंटेशंस। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं सिंपली कि यार अगर ये यहाँ पर ओरिएंटेशन खराब कर रहा है, तो क्या मैं इसको आगे स्वैप करूँ? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी खराब कर ही रहा है, आगे जाके करेगा या ना नहीं करेगा दैट इज द सेकंड थिंग, बट यहाँ तो कर ही रहा है। सो इंस्टेड कि यार इसको यहाँ से तो आगे भेजो, एटलीस्ट इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पर कोई नई वैल्यू ले आओ और आगे भेज दो। आगे जो होगा लेट्स सी कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, बट यहाँ से हटाओ एंड लेट्स मूव इट टू द नेक्स्ट पोजीशन। सेकंड थिंग इज कि यार यहाँ पर तो ऑलरेडी कोई ऐसी वैल्यू है, बट आगे ना कुछ वैल्यू के पेयर्स हैं, समथिंग लाइक जेड सेट। तो यहाँ तो ओरिएंटेशन ठीक है, वी डोंट रियली नीड टू मूव इट आउट। बट आगे वाली पोजीशन पे क्या इशू है कि यार वहां पर वो क्लैश कर रही है वैल्यूज। सो द बेटर स्टेप टू डू इज, वी नो कि बिना हिलाए भी यहाँ से वाई को हमारा काम चल रहा है, बिकॉज देयर इज नो डिस्टर्बेंस एट पर्टिकुलर दिस पॉइंट। बट इसको जहाँ स्वैप कराना था, विच इज बेसिकली एन माइनस आई प्लस वन पोजिशन, अगर उसके अराउंड डिस्टर्बेंस है, तो क्या हम उस डिस्टर्बेंस को ब्रेक कर सकते हैं? इफ दोनों पोजिशन पे डिस्टर्बेंस है तो हम किसी एक को ब्रेक कर सकते हैं, और मे बी दोनों को ही ना कर पाए। बट इफ किसी एक पोजिशन पे डिस्टर्बेंस है एट दिस पर्टिकुलर पेयर और द नेक्स्ट पर्टिकुलर पेयर, तो उनमें से जिस पर भी डिस्टर्बेंस होने वाली है हम उनको वहां से मूव करा लेते हैं। सो बेसिकली दिस इज आवर आई कैन से न्यू आई, एंड दिस इज इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन। तो इन दोनों में अगर डिस्टर्बेंस है या इन दोनों में अगर डिस्टर्बेंस है, तो इस पोजीशन में क्या होगा, यहाँ से z हटेगा, सॉरी नॉट फ्रॉम दिस पोजीशन, यहाँ से z हटेगा, z आ जाएगा यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस, so it will be zx and it will be zy। तो दोनों जगह डिस्टर्बेंस कम हो गई ना। सो यही ग्रीडीली मैंने सॉल्यूशन सोचा था एंड इट वर्कड। सो व्हाट वी आर गोना डू कि यार इफ वी हैव द array, we'll be start moving from this position एंड we'll check कि यार क्या यहाँ पे डिस्टर्बेंस है। इफ यहाँ पर डिस्टर्बेंस है तो यहीं पे मूव करा दो, अगर डिस्टर्बेंस है तो मूव, अदरवाइज we'll check किया क्या लास्ट पोजीशन पे डिस्टर्बेंस है, या इफ वहां भी डिस्टर्बेंस है तो उसको भी मूव करा दो, अदरवाइज दोनों जगह नहीं है तो लेट इट बी। क्या पता इस पोजीशन पर आने के बाद यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो तो इन्हें मूव कराना पड़ जाए, तो लेट्स नॉट मूव इट फ्रॉम हियर, आगे देख लेंगे। सो दैट्स हाउ दिस सॉल्यूशन वर्क्स, एंड इफ यू सी द कोड एंड आइडियली एवरीवन विल हैव और वुड हैव थॉट कि यार क्या पता डीपी है, क्योंकि देयर आर टू चॉइसेस, but greedily be this solution is working. So basically I had taken the input in one based indexing, क्योंकि क्वेश्चन में भी वन बेस के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला हुआ था सारी चीज़ों का, which is here कि यार सारा कुछ उन्होंने वन बेस से रखा था। so I had taken the input of one based array and I had started traversing from index 2 up till half of the array, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स तो if I am traversing till half of the array तो वो already n minus I plus 1 वाली कंडीशंस में कवर हो जाएंगे। so if any point my current index is equal to previous index, और I could say कि ये इनिशियल दो पोजीशन सेम है या फिर ये दोनों पोजीशन सेम है, इन बोथ ऑफ द केसेस आई एम स्वैपिंग इट आउट, कि जो भी उन्होंने बोला हुआ है स्वैप करो, दैट्स इट। एंड आफ्टर दिस इज डन, जस्ट ट्रैवर्स ऑन द एरे एंड चेक कि यार कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर अभी भी
दिस इज आर डिस्टर्बेंस है, so just add them up and print कर दो. So that would the answer for this problem. And answer यहाँ पे ऊपर n के साथ 0 से इनिशियलाइज कर रखा है, तो इसलिए यहाँ इनिशियलाइज करने की जरूरत है नहीं. So this was the code from problem C. Let's see the next problem. So let's see the problem number D. So after a trip with Sakurako, Kosuke was very scared because he forgot about his programming assignment. And in this assignment, the teacher gave him an array of integers and asked him to calculate the number of non-overlapping segments of the array such that each segment considered beautiful. And a segment is considered beautiful if its prefix sum is 0. So for a fixed array, your task is to compute the maximum number of non-overlapping beautiful segments. So basically what is being asked in the question is, ये pretty straightforward question था, nothing to think of. In problem D, we are given an array of n integers. So if this is our array of n integers and हमें बताना है कि यार max segments. So basically let's say अगर ये segment मुझे एक आंसर दे रहा है sum का 0, this is second, this is third, so the answer for this array would be 3, क्योंकि इन तीनों सेगमेंट्स का आंसर 0 आ रहा है. सो ऐसे कितनी मैक्स एरेज बना सकता हूँ, सब एरेज बना सकता हूँ मैं, दैट आर गिविंग मी द सम एज 0, उनका काउंट बताना है. So if we see one of the test case is, let's see this one, 12 minus 4, 443 or 43, 1 2 3 4 5 6 7, it's 43. 12 minus 4, 12 minus 4, 443, 443, okay, 43, minus 3 minus 5 8, minus 3 minus 5 and 8. So in this clearly दिख रहा है यार कि एक तो यही 0 है, minus 4 plus 4 यही 0 कर देगा, सेकेंड 43 का अनकाउंट तो कुछ नहीं है, minus 3 minus 5 minus 8 minus 8, एक ये 0 हो जाएगा. So the total sum for this subarray is coming out to be 0 and the total sum for this subarray is also coming out to be 0. तो हमारा टोटल आंसर कितना हुआ? My answer is 2. So let's see कि हाँ यार आंसर तो 2 है. So ये तो हमें समझ में आ रहा है कि whenever we are gonna start from the starting point, तो जितनी जल्दी मुझे एक जीरो सब एरे मिल जाएगी उतना जल्दी मैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब एरे बना सकता हूँ. तो ये क्लियर है कि यार ग्रीडी सॉल्यूशन विल वर्क फॉर श्योर, ग्रीडीली वर्क करेगा. अब होगा क्या कि यार मैक्स सब एरेज बनानी है एंड सब एरे सम और आई वुड से प्रीफिक्स सम, उसका एक कॉमन सी प्रॉपर्टी है कि यार इफ वी एनकाउंटर द सेम सम अगेन वी कैन मेक द सब एरे 0. तो यही हम यहाँ पे करने वाले हैं. दिस इज बेसिकली कि यार 12, then let's take an example of some test case, basically 1 2 0 2 2 and let's say minus 4. All right, so up till here prefix sum will be 2. Let's compute a prefix sum for this. So 1 2 2 4 6 0. So one thing is here, if we encounter a 0 तो ऑलरेडी एक जीरो सम सब एरे मिल गई है. वन थिंग इज दिस कि यार अगर हमें कहीं पे भी जीरो एनकाउंटर होता है
तो वी हैड ऑलरेडी गॉट अ जीरो सम सब एरे। तो अभी यहाँ पे -4 है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा 2। द सेकंड थिंग इज कि यार क्या ये 2 पहले कहीं आया है? यस यार, ये 2 ना पहले यहाँ पे आया हुआ है। तो अगर मैं इस 2 वाले प्रीफिक्स सम में से इस 2 तक का प्रीफिक्स सम, if I would subtract, if this is A, this is B, if I do B minus A, I will get the sum of this range, and this is coming out to be 0. So if we get a encounter 0 or same prefix sum, so in both the cases we know that there is a zero subarray, zero sum subarray exists. So this is the same property that we are going to use in this question कि यार हम क्या करेंगे? If there is an array, we will be maintaining a set कि यार अभी तक कौन कौन सा प्रीफिक्स मेरे को मिला है प्रीफिक्स सम, वो मैं इसमें स्टोर करने वाला हूँ। इसका नाम है सीन, कि यार ये क्या क्या मैंने अभी तक देख लिया है। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इनिशियली अगर कुछ भी नहीं मिला है तो वी नो कि यार एक जीरो सब एरे तो एग्जिस्ट करती है ना, टू चेक वो जीरो वाला केस। तो मैं इनिशियली यहाँ पे जीरो डाल के चल रहा हूँ। whenever I'll start कि भाई मेरे को जो भी वैल्यू मिलेगी मेरी सम की, let's say I had encountered sum sum here as 2, तो मैंने इससे पहले की सारी वैल्यूज इसमें डाल रखी हैं। यहाँ मुझे मिला 1, यहाँ मुझे मिला 2, मैंने डाल दिया। एंड अगेन यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी मेरे को ओके 2, तो मैं इसका सम करूंगा, इट वुड बी एस इज इक्वल टू 4, 4 डाल दूंगा। देन मुझे मिला वापस से -2, माई सम गॉट अपडेटेड टू अगेन 2। बट क्या ये 2 एग्जिस्ट करता है मेरे इस सीन के अंदर? हाँ यार एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब इससे पहले एक सब एरे ऐसी है जिसका सम 0 होने वाला है। तो मैं क्या करूं? whenever I encounter a कंडीशन जहां पर ऑलरेडी सेम प्रीफिक्स सम पहले एग्जिस्ट करता है, तो मैं अपने आंसर को अपडेट कर लूं। एंड क्या मैं अब सीन को क्लियर कर सकता हूँ? क्योंकि अब मुझे जो भी नई सब एरे कंसिडर करनी है वो इससे आगे दोबारा नहीं कंसिडर करनी है ना, क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज कराना है कि मैं कितनी बार ऐसे नॉन ओवरलैपिंग सेगमेंट्स कंसिडर कर सकता हूँ। तो नॉन ओवरलैपिंग के केस में ऐसा तो है नहीं कि एक प्रीफिक्स सम ये वाला कंसिडर कर लूँ, ए के बीच वाला कर लूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे आगे का ही कंसिडर करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो मैं कभी भी बड़ा ना लेकर के छोटे छोटे जितने मिल जाएंगे दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी। तो हम इसको सीन को क्लियर कर देंगे वापस से जीरो डाल के, एंड अगेन यही सेम स्टेप स्टार्ट कर देंगे। एंड लेट सपोज हमें यहाँ पे कुछ एस मिला, हमने डाला, सिमिलरली वी एनकाउंटर सेम एस हेयर, तो वी नो कि यार ये सब एरे अब जीरो होने वाली है। तो हम क्या करेंगे? देन अगेन विल अपडेट इट, उसको एम्प्टी करेंगे एंड सिर्फ जीरो डाल के छोड़ देंगे। And so on this process is repeat until we reach to the end of this array। तो हमें जितने भी मैक्सिमम जीरो सब एरेस मिलेंगे दैट वुड बी इन आवर आंसर, एंड हम आंसर को प्रिंट कर देंगे। सो लेट्स सी द कोड फॉर प्रॉब्लम डी। So here basically we have taken the input of the array, created a set named scene, और उसमें हमने जीरो बाय डिफॉल्ट डाल दिया, इनिशियलाइज आंसर एंड सम इज जीरो, हर एलिमेंट पर ट्रैवर्स करा ऑफ एरे, सम में कंप्यूट करा टू गेट द prefix sum, same sum exists। इन दैट केस हमने आंसर इंक्रीमेंट करा, सेट को क्लियर करा, सेट में वापस से जीरो डाला एंड सम को दोबारा से इनिशियलाइज कर लिया विद जीरो, एंड वी कंटिन्यू। एंड ऐसा नहीं है तो हमने उसको सम सीन में डालते रहे, एंड एट लास्ट वी विल प्रिंट आवर आंसर। सो दिस वाज द solution for problem D। I hope you guys understood till here। Let's move on to the next problem। So let's see the problem number E। So problem number E states that Sakurako's exams are over and she did excellently. As a reward, she received a permutation P, and Kousuke was not entirely satisfied because he failed one exam and did not receive a gift. So he decided to sneak into her room and spoil the permutation so that it becomes simple.
Permutation P is considered simple for every index one of the following conditions holds, कि या तो ये होना चाहिए कि P of I should be equal to I और P of I should be equal to I. So for example this 1 2 3 4 is simple. Let's see कि क्या कह रहा है in this question कि this is our problem E. So we will be given an array with an elements. So this is how our array will look like. 1 2 3 4. So 1 2 3 and let's swap them. All right. So if we take the indexes, so here these are our P and this is our I. So at this position P of I is equal to I. Here also P of I is equal to I, and on these positions P of I is equal to I. How? So basically on third index it is not equal to 3, but here P of I is 4, and if we check P of 4 it is equal to 3. So in that case this condition is getting satisfied. So we can say that this total array is a simple array. So this is what the question is saying, and in one operation Kousuke can choose indexes and swap the elements of it, and Sakurako is about to return home. Your task is to calculate the minimum number of operations that Kousuke needs to perform so that to make the permutation simple. So basically हमें ये jumbled form में मिलेगी यार, and we need to give the answer कि यार minimum moves कितने होंगे to make the array simple. And what we can do कि हम दो indexes choose कर सकते हैं I and J, and उनके elements को swap करा सकते हैं. These are the operations that are allowed. So let's see कुछ examples के साथ कि how this question is gonna. So let's take this example कि यार this is our array. So these are the p values. Here we are writing our index. So either of these conditions should be true for every index, and we have to give the minimum number of operations we had taken. So basically for the first index क्या कोई भी एक condition true है यार? सेम वैल्यू तो नहीं है on first index, but क्या जो वैल्यू है on that index वन पड़ा है? नहीं, दोनों जगह वन नहीं है. तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? हमें वन ही हलाना है. So if we try to get one to this position हमारे number of operations बढ़ जाएंगे. But what if I tell you कि भाई instead of getting one to this position आप वन को यहाँ ले आओ on the second position कि यार 3 इधर आ जाएगा and 1 will get to this position. तो अब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि जो भी वैल्यू पड़ी है एट दैट इंडेक्स मेरा वन पड़ा है. ऑल राइट, सो फॉर दिस P of I is equal to 1, so that works. And same for second index, वैल्यू पड़ी है 1, यहाँ पर तो सेकंड 2 नहीं है, but on this index there is a 2, so this condition is getting satisfied for both of the indexes. थर्ड इंडेक्स के लिए देखेंगे, so for this also P of I is equal to 3, works. For this P of 4 which is 3, so on P of 3 it's 4, it works. So हर index पर ये वाली condition satisfy हो रही है, and the operations we had taken is 1. So let's see क्या इस test case का example 1 है. Yes, it is 1. So that's how we know कि यार ये work कर जाएगा. But what if I tell you कि यार if we see जो हमारे पास दोनों conditions हैं, in that case अगर हम consider करें तो होगा क्या? If we just take out this part of the problem कि यार यहाँ 3 पड़ा है, यहाँ 3 है, and this is 4. So these are basically the indexes and these are the P of I values. So this index is corresponding to this position, and फिर उस position पे जाते हैं हमें वो value मिल जाती है. And similarly for this index I get to this and मेरे को value मिल जाती है. तो हो क्या रहा है?
basically 3 and 4 both are corresponding to each other and they are satisfying the conditions. But what if जो initial position थी इस array की, which would look like this की 2 3 4 and 1, यहाँ हो क्या रहा था? If we get deeper into this, so these were the indexes 1 2 3 and 4. So first index किसको p of 1 किसको correspond कर रहा है? 2 को. From 2 अगर मैं देखूँ वो किसको correspond कर रहा है? 2 is corresponding to 3. अब 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 3 is corresponding to 4. फोर्थ पे क्या पड़ा है? 4 is corresponding to 1 एंड बेसिकली 1 पे तो 2 था ही. तो बेसिकली ये एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल बन गई. जबकि यहाँ पर अगर हमने देखा तो साइकिल तो यहाँ भी थी, नो इश्यूज, बट यहाँ पे साइकिल थी तो कितने लेंथ की थी या कितने नोड्स थे इंक्लूडेड? 2. एंड यहाँ पर कितने? 4. सिमिलरली जब हमें दो कंडीशंस गिवन है, फर्स्ट इज दैट p ऑफ i शुड बी इक्वल टू i. अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ बेसिकली ये कह रहा है कि 1 शुड कॉरेस्पॉन्ड टू इटसेल्फ. फर्स्ट इंडेक्स पे सेम वैल्यू होनी चाहिए. एंड इफ वी कंसीडर अबाउट द सेकंड टेस्ट कंडीशन व्हिच सेज कि यार फर्स्ट इंडेक्स पर जो भी वैल्यू पड़ी है दैट शुड बी इक्वल टू 1 एंड जो सेकंड इंडेक्स के लिए दैट शुड बी इक्वल टू 2. बट इसके अलावा द थर्ड और एनी अदर कंडीशन दैट occurs is कि यार साइकिल की लेंथ इससे ज़्यादा हो रही है, तो वो हमारे लिए इशू क्रिएट कर रही है. तो बेसिकली हमें करना है क्या है कि अगर साइकिल्स बनती भी हैं, सो एवरी साइकिल शुड बी लेस देन और इज इक्वल टू 2. इफ दीज आर द कंडीशंस तो हमें कोई इशू है ही नहीं, वो सिंपल है. अरे कोई इशू है ही नहीं, हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, नो स्वैप नीडेड. बट व्हाट इफ ये साइकिल 4 से बड़ी है, 2 से बड़ी है? सो इन एनी केस where this cycle is greater than is equal to 3, वहाँ हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा. अब ये वर्क क्या करना है? लेट्स सी दिस. तो इफ वी से कि यार कुछ नंबर ऑफ नोड्स हैं, उनके बीच में एक साइकिल है. these are some number of nodes. Let's say n, and इनके बीच में एक साइकिल है. साइकिल की भी लेंथ 5 होगी दिस केस, और आई कैन से n. why isn't it getting erased? साइकिल की भी लेंथ n है. तो मुझे अब इस साइकिल को इसी ऑर्डर में लेकर के आना है कि आइदर एवरी एलिमेंट शुड कॉरेस्पॉन्ड टू इटसेल्फ, और एटलीस्ट सिर्फ दो एलिमेंट्स एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड करें, नॉट एनी साइकिल लाइक दिस. तो होगा क्या? मेरे को बेसिकली इफ आई ब्रेक एनी ऑफ दिस एज, so if I break any edge, तो एटलीस्ट मेरी जो कॉन्टिन्यूअस साइकिल थी वो ब्रेक होगी. एंड उसके बाद मेरे जितने भी नोड्स हैं उनको मुझे हमेशा 2 2 के पेयर से पेयर अप कराना है, लाइक दिस. तो मेरा मैं स्वैप इस तरीके से कराऊंगा कि एटलीस्ट ये एज यहाँ से हटे एंड दिस शुड स्टार्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस. सो ये एक पोजीशन बन गई. अब बचे कितने नोड्स हैं? ये बाकी 2. तो इसमें मुझे अगर मैं ये ब्रेक करा करके दे स्टार्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर, तो बचेगा क्या? सिर्फ सिंगल नोड. तो मेरे को करना क्या पड़ा टोटली? पहले तो मुझे जितनी मेरी साइकिल है उसमें से एक एज तो मुझे नॉर्मली ब्रेक कराना पड़ेगा टू ब्रेक आउट द साइकिल, क्योंकि वो कंटिन्यू साइकिल अगर चल रही है तो वो तो वैसे ही कभी उससे बाहर नहीं आ पाऊंगा मैं. एंड आफ्टर ब्रेकिंग आउट द साइकिल जितने भी मेरे नंबर ऑफ एजेस बच रहे हैं उनको मुझे 2 2 के पेयर में डिवाइड करना है. सो बेसिकली अगर टोटल 4 एजेस हैं तो मैं 2 को अगर ब्रेक कर दूंगा तो बाकी 2 और ऑटोमेटिकली कॉरेस्पॉन्ड कर जाएंगे एक दूसरे को. तो जितना भी ये बचेगा उसका मैं हाफ पार्ट हमेशा ब्रेक कराऊंगा. सो दीज आर बेसिकली कितने मुझे ऑपरेशंस करने हैं. अब कौन किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा? हमसे एरे मांगी ही नहीं है एट लास्ट, तो हम क्यों जनरेट करें बैठ करके? हमें उन्होंने बस ऑपरेशंस मांगे हैं. तो व्हेनेवर वी फाइंड एनी साइकिल, अगर साइकिल है ही नहीं और साइकिल की लेंथ इज लेस देन इज इक्वल टू 2 है, तो देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग. बट अगर साइकिल की लेंथ इससे बड़ी बन रही है तो वी नो कि हमेशा साइकिल में से एक नोड तो वैसे ही हटाना पड़ेगा टू ब्रेक आउट द साइकिल, एंड जितने भी बाकी एजेस बचेंगे उनको हाफ करना पड़ेगा, सो दैट ओनली 2 2 के पेयर में
नोड्स लाया करें इंस्टेड ऑफ अकरिंग इन द पेयर ऑफ इन 3 और 4 ऑफ काउंट। तो इतने हमें ऑपरेशन चाहिए होंगे टू ब्रेक आउट फ्रॉम द साइकिल। अब बात आती है कि साइकिल कंसिडर कैसे करें। सो वी नो वाइल ट्रेवर्सिंग ऑन द एरे, मैं अगर किसी पॉइंट पे खड़ा हूँ एंड यहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो जहाँ जहाँ ये साइकिल जा रही है, ओके, सो मैं वहाँ पर एक वन डाल देता हूँ कि यार आई हैड विजिटेड दीज नोड्स इन एनी पर्टिकुलर साइकिल। एंड यहाँ से मैं साथ साथ साइकिल की लेंथ निकाल लूँगा प्लस विजिटेड मार्क कर दूंगा। सेकेंड थिंग मुझे क्या करनी पड़ेगी, इफ ये दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट नीड टू बी डन, एंड सेकेंड थिंग मुझे हमेशा क्या चेक करनी पड़ेगी, इफ माई लेंथ ऑफ दिस साइकिल इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 3, तो मुझे इसको ब्रेक कराना है। ब्रेक कराने के लिए हाउ मेनी ऑपरेशन डू आई नीड, कि भाई जितने भी साइकिल है, ओके, साइकिल -1 डिवाइड बाई 2, एंड को मैंने विजिटेड मार्क कर ही दिया है, सो बेसिकली ये कंसिडर हो ही चुके हैं साइकिल में। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं यहाँ पे आऊंगा तो मुझे यही नोड कंसिडर करना है। एंड अगर मैं यहाँ पे आया एंड दिस इज ऑलरेडी बीन मार्क्ड, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग फॉर दिस, क्योंकि ये ऑलरेडी एक साइकिल में कंसिडर हो चुका है जिसको हम ऑपरेशन में काउंट ले चुके हैं, एंड ये आपस में सेटल हो जाएंगे। कैसे सेटल होंगे, वी डोंट रियली नीड टू गेट इनटू दिस, क्योंकि हमें पता है यार एट लास्ट हमसे एरे नहीं मांगी, वी जस्ट नीड टू गेट आउट कि यार कितने मिनिमम ऑपरेशंस में ये काम हो पाएगा। So this is the main idea behind this, and if we see the code was pretty simple. So basically n input लेना है, आंसर को 0 से इनिशियलाइज कर रखा है यहाँ पे, एंड पेरेंट एंड विजिटेड दो एरे मैंने बना लिए हैं। पेरेंट हमें इनपुट मिलेगा कि कौन किसका पेरेंट है, एंड आफ्टर गेटिंग द इनपुट वी विल जस्ट ट्रेवर्स ऑन द एरे, एंड अगर वो ऑलरेडी विजिटेड मार्क्ड है तो हमें कुछ नहीं करना है, विच वी हैड डिस्कस हियर कि अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो कुछ मत करना, एंड अगर नहीं है तो एक साइकिल का काउंट स्टार्ट करो कि कितनी साइकिल है, एंड फ्रॉम दिस इंडेक्स तब तक मूव करते रहो जब तक हमें कोई विजिटेड नहीं, नॉट विजिटेड वाली कंडीशन मिलती जा रही है। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड मुझे जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं दोज आर नॉट विजिटेड येट, तो मैं उन पे जाता रहूँगा, एंड आई नो कि जब यहाँ से कॉन्टिन्यूसली ये वापस इसको पॉइंट करेगा तो ऑलरेडी मैं विजिटेड मार्क कर चुका हूँ, इसलिए ये मेरी पूरी साइकिल मेरे को मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ हम जब तक विजिटेड नहीं मिलेंगे सबको लेते रहेंगे, एंड वी विल मार्क विजिटेड ऑफ आई। एक्स इज बेसिकली द आइटरेटर जो हमें फ्रॉम पेरेंट टू पेरेंट टू पेरेंट जंप कराता लेके जाएगा, एंड वील इंक्रीज आर साइकिल बाय 1 ऑन एवरी आइटरेशन। एंड अगर ये साइकिल का काउंट इज ग्रेटर देन 3 है तभी हमें ऑपरेशन करने हैं, क्योंकि अगर साइकिल सिंगल है और इट इज बिटवीन टू नोड्स तो कोई इशू है ही नहीं हमें, बट अगर इससे बड़ी है तो वी नो कि यार साइकिल -1 डिवाइड बाय 2 इतने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, एंड इसमें से हमने अपने आंसर को इंक्रीमेंट करा, एंड आफ्टर आइटरेटिंग ऑन द एरे विल प्रिंट आउट आवर आंसर। सो दिस वाज द कोड फॉर प्रॉब्लम ई। लेट्स जंप टू प्रॉब्लम एफ। So Kosuke is too lazy and he will not give any legend, just the task. Fibonacci number is defined like this. So this is the general equation for the Fibonacci numbers, and we denote g of n comma k as the index of nth Fibonacci number that is divisible by k for given n, and k compute g and k, as this number can be too big, so we have to take modulus with the 1 9 plus 7. So for example, G32 is 9 because the third Fibonacci number that is divisible by 2 is 34. So basically करना क्या है? Question was pretty straightforward. ये था कि तो आई गेस फिबोनाकी नंबर सबको क्लियर होंगे, वी डोंट हैव टू गेट इनटू दिस कि यार फिबोनाकी क्या होते हैं। फिबोनाकी इज बेसिकली अ सीरीज जहाँ फर्स्ट टू नंबर्स आर दिस, एंड आफ्टर दैट every number is just the sum of previous two numbers. So this is 2 and 3, 5, 8, 13 and so on. So here every number is just a sum of previous two numbers. So this is our Fibonacci series, and to get answer for any n comma k is basically कि यार nth Fibonacci नंबर के लिए सॉरी k से divisible by k and nth Fibonacci बताना है ऐसा। So if I say कि यार g of 2,2 बता दो कि 2 से डिविजिबल होने वाला सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज दिस विच इज गेटिंग डिविजिबल बाय 2, सेकेंड नंबर इज दिस, सो इसकी मैं इंडेक्स बतानी है। तो इफ वी गेट इनटू इंडेक्सिंग की 3 4 5,
6, so g of 2 comma 2 should be 6. और क्या बताना था, नंबर बताना है, is 9. Third Fibonacci number is divisible by 2 is uh, third, yes, indexing बतानी है यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ indexing ही थी. So this is 6, and similarly if we get into g of 2 comma, sorry, 3 comma 2, that third number divisible by 2. So after 13 we have 21 and 34. So this is the second number divisible by 2, this is the third number divisible by 2, and 7 8 9. So this is at the ninth index. So ये हमें बताना है. So how are we gonna do that? First thing जो brute force solution हमारे दिमाग में आएगा कि यार generate a Fibonacci series up to some point and just keep on moving until we find the kth Fibonacci number. But यहाँ पे जो constraints हैं, that n can go up to 10 to the power 18 and similarly k can go up to 10 to the power 5. So we don't know कि nth number किस range में लाया करेगा and how are we gonna compute it. So this is not gonna work कि यार हम सारे numbers generate करके and we I keep on iterating on them, क्योंकि what if n is 10 to the power 18, so हम कब तक इसको iterate कराते रहेंगे until we find that number. So it will result into a TLE, so we cannot go with the brute way. So the second thing is कि do we can we use any type of mathematics or anything to get to a formula. So there is a pretty cool website. This is the website. So here you can generate any series or any number and get a general formula out of it. But after getting through this, I landed to a website which was this. कि यार Fibonacci patterns किस तरीके से behave करते हैं based on their indexes. So if we see, this is the Fibonacci series. Yes, this is the Fibonacci series. So we can see कि यार पहली चीज तो सबसे पहले द नंबर इफ k इज इक्वल टू 1, तो यार प्रिटी श्योर है कि भाई सारे नंबर डिविजिबल होते हैं 1 से. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि जो nth नंबर है हम डायरेक्ट n को प्रिंट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, कि जो भी आपका n है दैट वुड बी द फिबोनाची नंबर. कोई इशू है ही नहीं हमें, डायरेक्टली आप nth फिबोनाची नंबर प्रिंट कर दो, नो वरीज. सेकंड थिंग इज, अगर इसके अलावा कुछ होता है, इफ लेट्स से k इज इक्वल टू 2, तो बेसिकली यहाँ ना एक पैटर्न चलेगा and which was pretty straightforward कि यार this is the first number divisible by 2, या नीचे basically ये Fibonacci numbers हैं, these are the Fibonacci numbers and these are the indexes. So first number divisible by 2, second number divisible by 2, third divisible by 2, fourth divisible by 2, and so on. This will be I guess divisible by 2. So यहाँ हम देखेंगे ना, so all of them are continuously gonna repeat कि यार इसके बाद 1 2 एंड थर्ड नंबर पे रिपीट हो रहा है, वो सेकंड फिर थर्ड पे रिपीट हो रहा है, फिर 2 छोड़ के फिर थर्ड पे है, फिर 2 छोड़ कर फिर थर्ड पे है, एंड सो ऑन. दिस इज द पैटर्न व्हिच इज बीइंग फॉलोड बाय एवरी नंबर. सिमिलरली अगर हम देखें कि यार k के लिए कितने पे रिपीट हो रहा है, आफ्टर 3 नंबर्स रिपीटिशन चल रही है. सिमिलरली इफ वी सी कि यार फॉर 4 क्या होगा, 4 के लिए फर्स्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 4 इज दिस. सो let's take a different color. Okay, so for 4, first number divisible by 4. Okay, second number divisible by 4. So for 4 we can see कि यार 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 steps के बाद repetition हो रही है. This is 4 not 2. Similarly if we consider let's say 5, k is equal to 5. फिफ्थ वाला कौन सा है, फर्स्ट नंबर आई गेस दिस, 5 के बाद 55 and I guess 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. तो this number will also be divisible by 5. So ये पैटर्न कैसा चल रहा है कि यार जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स है ना, फॉर एनी नंबर टू बी गेट डिविजिबल बाय k, सो पहला नंबर जो डिविजिबल बाय 5 है इज एट फिफ्थ इंडेक्स. तो हमेशा आफ्टर 5 iterations
the second number we will be found at the index जो कि divisible by 5 होगा. Similarly from this point after 5 iterations 1 2 3 4 and 5 this number will be divisible by 5 and this is the same pattern which will be followed for every number. So हम क्या कर सकते हैं? So simple solution यहाँ पे based on pattern on observation ये था कि यार we can find first index which is divisible by k and after that we know कि ये index क्या आएगा. If let's say this is the index तो nth नंबर कितने में मिलेगा हमें n into index पर. So this is the only answer for this problem. But एक check ध्यान रखना कि यार for k is equal to 1 we can directly print n क्योंकि हमें पता है पहले इंडेक्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है वो ऑलमोस्ट जीरो पे ही होगा. So that's not needed to be done. So this was the code for problem F. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था बस पैटर्न बेस्ड और ऑब्जर्वेशन थोड़ा था. यहाँ से अगर हम कंप्यूटेशन में घुसते तो आई गेस कुछ नहीं मिलता बट anytime you get into a problem based on maths I suggest कि यार आप इस encyclopedia वेबसाइट पे जाओ and just develop any relation or something कि जो हम use कर सकें in any way. So basically I had taken input of n and k. अगर वो k के equal नहीं है so I know the previous two numbers are gonna be 1 and मैं तब तक इस loop को चलाऊंगा until and unless my current number is divisible by k. एंड हमेशा ये ध्यान रखना कि हमें बड़े नंबर्स नहीं जनरेट करने क्योंकि दैट कैन गो आउट ऑफ माई बाउंड्स. तो हमें बेसिकली क्या कंसिडर करना है कि वेदर माई करंट नंबर इज डिविजिबल बाय k और नॉट. ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? बाय टेकिंग मॉड विद एवरी वैल्यू एंड इफ दिस वैल्यू एनी हाउ गेट्स इक्वल टू 0 सो वी नो कि यार yes this is my current index. So for that this is index which is getting incremented and anytime my current element gets equal to 0 I am gonna break out. And ये बहुत basic iteration and loops हैं of Fibonacci. uh, After getting out of the loop I know my answer is n into index and if k is equal to 1 the answer is n itself. So this was the code for problem number F. Let's move on to problem G which was my favorite problem in this contest. Yes. So I have been practicing trees and binary lifting and uh, the DP on trees and these topics based on trees from a pretty long time. And I had gone through a gym contest done made by second trend and that was a great contest with pretty great problems. So उसमें एक problem है problem number D which was kind of similar to this problem and the ideas behind this problem was pretty much same from that contest. So we can relate the problem statements also like the idea behind to solve these problems. So for this problem let's read out the statement that given a tree with n vertices rooted at vertex 1 while walking through it with her cat Chefir Sakurako get distracted and Chefir ran away. So basically cat है वो भाग गई है वहां से. To help Sakurako, Kosuke recorded this Q guesses. In the ith guess, he assumes that Chefir got lost at vertex Vi and had Ki stamina. So also for each guess, Kousuke assumes that the Chefir could move along the edges an arbitrary number of times from vertex A to B. If A is and so this is how gonna move. So he can for in the distance apart as what the Chefir could go from vertex 5 having Ki. So let me simplify the problem statement for you. So basically, this is what the problem statement is saying. Here एक tree है which is rooted at 1
So if this is the tree, all right. So जो cat है वो किसी भी vertex पे खो सकती है and with some ki stamina. So it can get lost at any vertex v with k of I stamina. So if the cat is lost at this point, so from this there are two options that she can follow the path. कि अगर वो ऊपर मूव करती है to its ancestor, so the stamina will be reduced by 1. If she goes downwards, the stamina remains same. So let's suppose if at this point cat has a stamina of, let's say, 2, so हमें ये बताना है कि how much max distance cat can go away. Chefir can go away. ओह अब एक की स्पेलिंग गलत हो गई, AWAY, ठीक है, ये हमें बताना है. सो फॉर k इज इक्वल टू 2 फ्रॉम दिस नोड कितनी दूर जा सकती है कैट. लेट्स से अगर वो नीचे जाती है तो एट मोस्ट वन डिस्टेंस, एंड सिमिलरली फॉर दिस. सो अगर वो डाउन जाती है तो एट मोस्ट ही कैन गो वन डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओरिजिन नोड. अगर वो लेट्स सपोज एक मूव ऊपर जाती है, सो माय k गेट्स रिड्यूस्ड, नो इश्यूज. अब न्यू k मेरा हो जाएगा 1. सो फ्रॉम दिस पॉइंट एक और ऑप्शन है, वो यहाँ जा सकती है. टोटल नंबर ऑफ मूव्स आर 2. तो यार एक ऑप्शन पहले हमने चूज करा था डाउन जाने के लिए, उससे एक आया. सेकंड थिंग इज वी गॉट 2. थर्ड थिंग वो क्या कर सकती है, यहाँ से ना इंस्टेड ऑफ गेटिंग डाउन वो दोबारा से ऊपर जा सकती है क्योंकि देयर इज सम स्टेमिना लेफ्ट. तो वो ऊपर गई, अगेन दिस विल बी रिड्यूस टू 0. बट अब यहाँ से वो कहाँ जा सकती है, टू दिस पाथ, टू दिस पाथ एंड फ्रॉम, लेट्स मेक इट लाइक दिस, कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एंड यहाँ से यहाँ. So total 2 steps up, 3 steps down. So she can move 5 steps this way. This is the max distance that the cat can move. And वो obviously बात है यही बात follow करेगी. So इसी तरीके से हमें figure out करना है कि यार for every given query cat कितना max distance travel कर सकती है. So this was the problem statement. I hope this is clear. So if we get into the intuition कि यार हमने problem statement कैसे solve करनी है. So like the way that we had seen in this example, कि यार for every node the cat have two options. Either to go down, and the second thing is go up. दोनों चीजें हैं. अब एक एक करके चीजें क्लैरिफाई करते हैं. So for going down the path, if this is the tree and let's suppose cat is at this point, ठीक है. So we know going down does not cost us stamina. Stamina तो reduce होता है नीचे जाने पे. तो from this point cat जा सकती है नीचे by any number of steps. तो obvious ही बात है, if the cat have two options कि यार एक step जाओ and दो steps जाओ, तो cat कौन सा choose करने वाली है. Cat is gonna choose for sure low depth. So for going down the path हमने जो दो options थे उनको ये simplify करा कि from the two options, if she is going down the path down from node, तो cat will go into max depth. ऐसा तो है नहीं हमें यहाँ से सारे पाथ चेक करने कि कौन से पाथ से मैक्सिमम आएगा. इट इज फॉर श्योर कि वो हर पॉइंट से अगर नीचे जा रही है तो वो मैक्स डेप्थ तक ही जाएगी, सो दैट ही कैन ट्रेवल एट मैक्स डिस्टेंस फ्रॉम एनी नोड पॉसिबल. क्लियर है. सेकंड ऑप्शन वाज टू गो अप. इसके लिए एक क्राइटेरिया है यार बहुत सिंपल सा, कि शी कैन ओनली मूव k steps up.
ये क्लियर है हमें? के बेसिकली स्टेमिना है, एंड टू मूव एनी स्टेप अप उसको एक स्टेमिना अपना खर्च करना पड़ता है, सो दैट शी कैन ओनली मूव के स्टेप्स अप। इससे ज्यादा वो ऊपर जा ही नहीं सकती। सो लेट्स सी कि ये अप वाले ऑपरेशंस कैसे डिफर करेंगे। सो if the tree is like this, let me make a hypothetical tree so that it is clear to us. Okay, all right. So from this, ठीक है. So let's suppose the cat is at this point. Hmm, ऐसी तो नहीं होती cat. चलो. And she has a stamina of 2 initially. ठीक है. So from this point, cat के पास क्या ऑप्शन है? नीचे जाना, कुछ है ही नहीं. So यहाँ से तो कुछ डिस्टेंस आने नहीं वाला. So she thought कि यार एक स्टेप ऊपर चलते हैं. अब cat आ गई है यहाँ पे. अब देर आर टू ऑप्शंस कि यहाँ तो यहाँ से डेप्थ पकड़ ले. सो इफ यहाँ से डेप्थ में जाती है तो शी कैन गो अप टू डेप्थ. एंड इनिशियली वो कितना दूर आई है यहाँ से? 1 स्टेप्स. तो टोटल देयर आर 3 स्टेप्स दैट शी कैन गो फ्रॉम choosing 1 step up and 2 steps down. Again, she has left with stamina 1 after moving 1 step upside. तो एक और स्टेप ऊपर जा सकती है वो. If she reaches this step, तो यहाँ से मैक्स डेप्थ कितनी मिल रही है हमें? Here the depth is 1, 2, 3 and 4. So from this point 4 is the depth plus 2 are the steps that she had came ahead. So there are total 6 steps. So which is more profitable for her कि यार 6 steps दूर जाना. So ये भी हमें क्लियर हो रहा है कि हम while moving every step up हम ये चेक कर सकते हैं कि यार from this point of node max depth कितनी है. एंड वी कैन कंप्यूट कि यार मैं जितना दूर आया हूँ बाय टेकिंग की इतने स्टेप्स, एंड फ्रॉम दैट मेरी मैक्स डेप्थ कितनी मिल रही है, अगेन फ्रॉम 1 स्टेप फिर कितनी मैक्स डेप्थ मिल रही है, एंड सो ऑन. हम आंसर को मैक्सिमाइज करा सकते हैं. बट द थिंग इज देयर कैन बी क्यू क्वेरीज, एंड फॉर क्यू क्वेरीज हम हर नोड के लिए एक एक स्टेप ऊपर जाएंगे एंड फिर डेप्थ कैलकुलेट करेंगे. सो दैट इज ऑलमोस्ट n स्क्वायर operations for one query. How n square? Let me explain कि यार कैसे होंगे. There can be n steps of inverse case, and for every step you are gonna take order of n to compute max depth from here. So instead of calculating all of both of these things on the go, हम क्या कर सकते हैं? We can do one thing which is pre-compute depth for every node, क्योंकि depth तो कभी भी change होने नहीं वाली. The tree will gonna remain same for everything क्योंकि उन्होंने बता दिया है the tree is rooted at 1. So from root 1 the depth of every node will be remain same throughout the queries. तो हम pre compute कर सकते हैं depth in order of n, and after that जो मेरी for every q queries, so मेरी time complexity for one query कितनी रह जाएगी? Order of n, which is just for moving up. But there is a very good concept named as binary lifting, which is a very great thing to move up in the trees in case of LCA or up traversal, or you can say parent traversal. So what is this binary lifting? So basically binary lifting is like, suppose we have k is equal to 11. So first thing is we can move 11 steps
one by one. So first option is कि यार we can move 11 steps one by one. So this is gonna cost us order of n time complexity. But if we use binary lifting says कि यार हर नंबर को हम 2 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So here 2 to the power this is like 2 to the power 2 4 8 plus 2 to the power 1 plus 2 to the power 0. Somehow like this ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 and this is equal to 11. So binary lifting क्या कहेगा? Instead of moving 11 steps one by one, just move 8 steps at once, then move 2 steps at once and then move singles. So that's how you can also go 11 steps up, and this is gonna cost you log of n operations. तो यार ये मेरे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि if there are total q queries and q can be up to 10 to the power 5, I guess. Yes. So if my q is 10 to the power 5, so this is gonna be the time complexity total. So this is almost n square and this is n log n. Which one is more better for me? Obviously n log n, because n square is not gonna work in this way. So that's why we use binary lifting while traversing upsides. And ये हम कैसे करते हैं? So there are plenty of videos and approaches on binary lifting here, how binary lifting works. And if you want कि यार मैं explain कर दूं, तो do let me know कि how we use binary lifting. So the idea behind binary lifting is clear, I guess. कि instead of traversing one step at a time, we travel in power of 2. So this is the main idea behind binary lifting. And इसके लिए हमें एक चीज compute करनी पड़ती है, which is for every node we have to store 2 to the ith power parent. ये हमें स्टोर करना पड़ता है. If we compute this previously, तो हमारे लिए traversing बहुत easy हो जाती है. So this is the major idea behind binary lifting कि यार हम हर step ना move करके we are gonna move in the power of 2s. So suppose this is the tree. अब हमारी प्रॉब्लम किस लेवल तक ब्रेक डाउन हो चुकी है? So if this is the tree, what we can do, हमने हर नोड के लिए उसकी 2 to the power 2 to the ith पावर कंप्यूट करके रखी हुई है. So first thing is to pre-compute the depth. Second thing is to pre-compute, I would say, binary parents. So this is almost n into log n operation. This is order of n operation. And the third thing is, और हमें ट्रेवर्स करके चेक करना है कि यार टोटल हम जितना भी नोड्स पर जा सकते हैं वहां से मैक्स डेप्थ कितनी है. So let's suppose we start from this node. So instead of moving one by one step, if total there are, let's say k is equal to 3, so here 2 to the power r, 2 is to 1 and 2 is to 0. So basically we will move 2 steps in at a time and 1 step individually. So if we move 1 and 2 steps together, so we need to get the max depth beyond this. So this is the idea कि यार along with binary lifting we can also compute max depth at every binary parent. ये same concept, which is this the combination of these two things,
is used in a problem statement which is in the gym contest written by second thread, which I have been solving lately. So this was the problem. If you guys want to explore it, this is cycle free flow, and this is the pretty much same problem. Instead of getting max, we need to get the minimum from the tree. So that's where binary lifting and pre-computing max things, or sorry, min things is used. And we are going to use pre-computing binary parents and also computing max depth at every parent. So we know यार यहाँ के लिए max depth कौन सी है. So we know कि यार max depth is 1 2 and 3, and मैं यहाँ पे कितने levels आ चुका हूँ, which is 2 steps. So total 2 steps plus 3 depth, ये मेरा एक ऑप्शन हो गया for this particular node. So total 5 distance मैं यहाँ से दूर से रखता हूँ, which is 1 2 3 4 and 5. So we know कि यार 5 distance away I can go from this point. Again अभी एक पेरेंट और ऊपर जाना रह गया है हमारे लिए, क्योंकि वी विल चेक कि यार हम इस स्टेमिना में कितना दूर जा सकते हैं. तो वी विल चेक ऑल द पॉसिबिलिटीज. सो फ्रॉम दिस पॉइंट मुझे एक पेरेंट और अबव जाना है. सो फ्रॉम यहाँ से मैक्स डेप्थ कितनी है? फ्रॉम हियर इट इज 1 2 3 4. सो डेप्थ इज 4 and distance is, or I can say steps is plus 3 steps. So total is 7. But क्या 7 है यहाँ से? If we check total traveled distance from the original node to this point, it is actually 1 2 3 4 and 5, but 7 तो नहीं है. So ये issue आ कहाँ से रहा है? The issue is कि यार there is a possibility कि आप जिस path से current parent तक पहुंच रहे हो and जहाँ पर आपकी max depth लाया करती है, वो दोनों सेम पाथ पे हो. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. तो होगा क्या? अगर वो दोनों सेम पाथ पे लाया करते हैं तो फॉर श्योर वो कुछ ना कुछ ऐसा पाथ होगा जो सेम ट्रेवल कर रहे हैं, विच इज गोना एडिंग ट्वाइस. हमें इस चीज का बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रहना पड़ेगा दैट हाउ टू हैंडल दिस थिंग. सो उसके लिए बेसिकली द आइडिया इज टू स्टोर टू यूज टू थिंग्स. One is max depth and second max depth. So what we can do, हम while going down the DFS we can check कि यार इस नोड को इस this max value कैसे अपडेट करना है. So if this current node, let's say मैं अगर दूसरा ट्री बनाऊं, so there is a possibility कि from this node when I am moving to this node मेरी मैक्स डेप्थ भी इसी सेम सब ट्री के अंदर लाया करती है. सो इफ दिस इज द सिचुएशन, तो मैं हमेशा जो सेकंड मैक्स डेप्थ है उसको कंसीडर करूंगा टू गेट टू द फास्टेस्ट नोड, फारदेस्ट नोड, इंस्टेड ऑफ दिस, बिकॉज वरना ये सेम एज 2 बार कंप्यूट हो जाएगा. सो व्हेनेवर आई एम मूविंग इनटू द सब ट्री ऑफ द नोड, सो दिस इज द मेन थिंग कि whenever we are getting into the subtree of node which gives max depth, update current node with minimum depth. Oh, not minimum, second maximum depth. Second max depth. And we have to backtrack this thing for sure. So this is the idea behind this problem कि यार कैसे work करने वाला है. So there are total 2 or 3 concepts. The first thing is pre-computing
max depth for every node. These are the values जो हम हर node के लिए करने वाले हैं operations. Second thing is pre-computing binary parents, or we can say the binary lifting part. And what we are gonna do is, third thing is, so this binary lifting and this max value pre-computation part is pretty much the same. So basically इसमें हम करते क्या हैं, if the tree is like this, तो हम इस node के लिए update करते हैं every 2 to the power ith values, whether it's the parent value or the max value, anything. एंड ये हम नीचे डाउन द पाथ पुल कर देते हैं, एंड बिकॉज ये जो नोड है ये सारी वैल्यूज अपनी कंप्यूट करता है द पेरेंट वाली बेस्ड ऑन द प्रीवियस नोड, इसलिए हम पहले करंट नोड का काम करके देन वी गेट इनटू डीएफएस. तो मैक्स वैल्यू प्री कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, बाइनरी लिफ्टिंग प्री कंप्यूट करनी पड़ेगी, एंड मैक्स डेप्थ प्री कंप्यूट करनी पड़ेगी. उसके बाद फॉर एवरी नोड वी कैन answer queries in almost log of n time. And the thing that needs to be taken care of, ki if getting in subtree of max depth, then use second max depth. That अगर ये दो चीज़ों का हम ध्यान रख लेंगे तो we can easily answer all the queries in log of n time. And this was the major idea behind this. And even after getting used to this things, थोड़ा सा time लगता है to think of the problem, but in the terms of trees कुछ ही concepts हैं which are Euler tour, binary lifting and DP on trees जिन पे based on problems आते हैं, and they are pretty much straightforward if you are able to think in the right direction. So if we see the code for this problem, so this was the code. So let me explain it to you step by step. So in this solve function we will be taking the input of the nodes and we will be making the adjacency list. यहाँ तक हमने सिर्फ अपना ट्री कंस्ट्रक्ट करा है. From there the DFS call is going, and इस DFS function के अंदर we are doing three things, or I can say two things in our case, which is basically computing level and depth and so on. Binary parents. So here dp of node 0 basically represent 2 power 0th parent of node. That's how it is represented in the form of, so dp is basically the parent binary parent value, and this is how we compute it, and so on. मैंने level और depth भी compute कर लिया in the same DFS, and this is the straightforward code for DFS, and that's how this DFS function is working. and यहाँ से हम सारी चीजें pre-compute कर रहे हैं, and everything is global, so pass करने की कोई need है नहीं, and they are getting computed. After that मैं सारी queries को input ले रहा हूँ, and I am storing it in the form of कि यार for particular node, same node के लिए multiple queries हो सकती हैं, and the answer would be pretty much same, क्योंकि for every node मैं सारी binary powers एक बार में compute करूंगा तो उनको एक बार में आंसर कर सकता हूँ. I don't need to get कि यार मैं बार बार compute करूँ, तो simply उनको बस मैंने वो कर लिया है for node के against कौन सी query का कितना स्टेमिना एंड उसका आंसर किस इंडेक्स पे आना चाहिए, द ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर query वो रिस्टोर कर लिया हमने. And from this DFS2 we are gonna answer every query. So in DFS2, first thing we are gonna update values for this current node by this depth of node minus level of node.
So this is basically our total distance minus steps जो हम कंप्यूट कर रहे थे, एंड एवरी नोड के लिए हम जा करके उसको अपडेट करके आएंगे. दिस इज एग्जैक्ट सेम कोड लाइक दिस बाइनरी लिफ्टिंग पार्ट, बट इसमें हम इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टोरिंग द वैल्यूज हम उसको मैक्सिमाइज करा लेते हैं फॉर द एवरी गिवन वैल्यू इन द ट्री. And this, okay, so after that for every query for this particular node हम उस query को आंसर करेंगे. एंड आंसर इज नथिंग, हम जितने भी k के पावर्स में सेट बिट्स होती हैं हम उन पे एक एक करके ट्रैवर्स करेंगे, एंड आफ्टर गेटिंग टू द टॉप जितने भी सारी मैक्स वैल्यूज मेरे को मिलेंगी we are gonna take the max of it and returning from our function. So इस तरीके से हम for penny particular node सारी queries आंसर कर सकते हैं. The second thing is यहाँ से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिंपल मैक्स डेप्थ एंड सेकंड मैक्स डेप्थ कैलकुलेट कर रहे हैं टू चेक किया जो हम नेक्स्ट बीएफएस कॉल भेजने वाले हैं, डीएफएस सॉरी बीएफएस कह रहा हूँ, नेक्स्ट डीएफएस कॉल भेजने वाले हैं इन द ट्री. उसमें इफ जिस नोड के लिए भेजेंगे वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ द सेम डेप्थ और नॉट, तो वो हमें पता चल जाएगा कि अगर उसकी डेप्थ इज इक्वल टू द मैक्स डेप्थ तो यार हम उसमें कॉल भेजने से पहले अपने नोड को अपडेट कर लेंगे विद द सेकंड मैक्स वैल्यू इंस्टेड ऑफ द मैक्स, एंड यहाँ आकर के हम उसको बैक ट्रैक कर लेंगे. दिस इज द बैक ट्रैक पार्ट कि वापस से अपडेट कर लो विद द मैक्स वैल्यू. So that's how this code is gonna work. So there are plenty of concepts that are being used in this problem. So if you want the deeper explanation of this problem or any of the concepts, do let me know in the comments. And if you guys wanna explore all of the similar level problems, you can go to this gym contest by second thread, and this is a pretty good contest covering almost all the topics related to basics of these trees. So thank you so much for joining. I hope you understood all the problems.